Okay, sir, let me introduce myself. हेलो। Yes, Santosh. सर मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं मेट्रो रेल में कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और मेरा जो जॉब है वो 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे अभी यहाँ पे। कितने ईयर का और है? हाँ सर, कितना कितने ईयर का एक्सपीरियंस है? 4.6 ईयर्स, 4 ईयर्स। 4.6. ओके. ओके सर। एंड सर क्या सॉरी डोमेन क्या है आपका डोमेन? डोमेन सर एज अ पोस्ट प्रोसेसिंग। अच्छा. ओके. रिपोर्ट मेकिंग एंड लॉग वर्क एंड यस ऑल. यस यस। ओके. ग्रेट. नेक्स्ट. यस गुरदीप. जी सर सॉरी सर, वो माइक्रो ऑन नहीं हुआ था। ओके, नो थिंक प्रॉब्लम. साल से 4 साल का डीटी इंजीनियर का एक्सपीरियंस है अभी। 6-7 महीने हुए हैं मेट्रोटेल में रिपोर्ट मेकिंग में। ओके. मतलब आपका 3-4 साल का आपका भी एक्सपीरियंस है ना? हाँ हाँ जी जी। डीटी में. डीटी में नहीं, अभी रिपोर्ट मेकिंग में आया हूँ। 6-7 महीने हुए हैं अभी मेट्रो में। अच्छा. ओके ओके. आई अंडरस्टैंड. ओके. नेक्स्ट. चंदन. चंदन. चंदन, एनी इशू? और म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? चलो, संतोष चावर, नोकिया. Hi, my name is Santosh. Currently, I'm working with Nokia, and I have 7 years of experience. Currently, working with Nokia as a PACO lead. Santosh, you have joined SIP and IMS, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, correct. Okay, okay. So, Idris. Hi guys, this is Idris. I work for Samsung. Okay. Idris, you joined from out of India? Hi. In which country you have? In job? US. US. Okay. Yep. And your domain is RF or something else? My domain is sport. Support. Yeah, after acceptance, production network. Okay. Great. Next, Nitin. Hello all, my name is Nitin. I'm working in L&T. Currently, I'm working for Zebra as at the client location. So I'm working as a testing engineer, and I have work experience of 5 years. Previously, I worked for Marcus Tech, and in Marcus Tech, I have testing experience of LTE. So I joined this class for SIP and IMS courses. SIP and IMS. Yes. You are working on SIP IMS or something else? Actually, I'm working for SIP IMS only. Okay. So, Okay. yeah. Next. Guys, anyone can give. Okay, we'll ask one by name. Yeah, Braj. Braj Mohan. Hey, good morning, sir. Introduce yourself. In which domain you are working, in which company, and how many years of experience. Guys, those who's not introducing yourself will remove in next 5 minutes. Okay, will not entertain that, guys. Those who are having problem to introduce yourself.
Yes, Brajmohan. I am Rajmohan Kumar. I have 2 year experience in Aarav. You are doing drive test or something else? Aarav coordinator and circle project manager. Circle project manager. It's a big position. Braj, what is your CTC? Current CTC is 4.5 lakhs. बट जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर सर्कल प्रोजेक्ट मैनेजर बने हो यार, उसके हिसाब से तो 15-20 नहीं लाख का पैकेज होना चाहिए। नहीं, वो तो वेंडर पे थे सर। हाँ, कंट्री हेड लोग हाँ बन जाते हैं 5 लाख में, पता है। हाँ चलो कोई बात नहीं। चंदन। हाँ सर, थोड़ा ये पटना का था। Yes, sir. ओके चंदन। Good morning, sir. यस चंदन। My name is Chandan Kumar. Currently working Bharat Test House as a testing engineer, EMC and RF field. आरएफ फील्ड। टोटल I, एक्सपीरियंस I- चंदन। more than 6 years in electrical मोर देन। field, but recently joined in Bharat Test House. My field in EMIMC and RF field. ओके चलो ग्रेट। देन हरीश। हरीश। हरीश एनी इशू? नवित। Yes, sir. Sir, I am having 5 years experience in telecom. I'm working right now as NPO in in Geo project. ओके ग्रेट। देन रुचा। Okay, no issue. Already discussion with Rocha, having experience 14 years. Yeah. Santosh Kumar, I think all done. Okay, guys, no issue. So I have few questions for all. Have you previous understanding about the protocol testing and all? What is protocol? नहीं सर, Anyone अगर can उसका थोड़ा explain? हेलो दीपक सर। Yes, yes, tell me. हाँ सर, इसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर, बेसिक भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ सुना है, नहीं बहुत आप बार सुना है सर नहीं इसका। एक्चुअल में आपने जब इंजीनियरिंग किया होगा ना, ऑन दैट टाइम उसमें भी प्रोटोकॉल था ना, वही डेफिनेशन का आंसर दे दो। वही सेट ऑफ रूल्स ही होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। चलो मैं जस्ट सिंपल वी आर टेकिंग जस्ट नॉन टेक्निकल है ना। नेक्स्ट 10 मिनट्स सपोज वी हैव वन सिम कार्ड, ओके, एंड वी हैव a new mobile. If I inserted the SIM card into mobile, what is the procedure to attach with network? कैसे वो नेटवर्क से अटैच होता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है तो किस ऑपरेटर का सिम कार्ड है? जस्ट आई नीड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सर एनीवन? सिप और मिप के थ्रू इनिशियली तो सिम और उससे मिव? हाँ हाँ, लाइक PLMN आइडेंटिटीज लाइक MCC MNC होता है हर एक हाँ ऑपरेटर का। करेक्ट। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, किसके पास होता है? वेयर इज दिस इंफॉर्मेशन कंटेंट? तुम्हारे MC में भी पता चल जाता है। कहाँ पर रहेगा? तुम्हारा MC सिम कार्ड में स्टोर्ड होगा ना। सिम कार्ड में स्टोर MC होगा, जो ओके। वैल्यू है। जो अपने को SIB MIB आता है, वो अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन और डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन किस तरफ से आता है, इधर नेटवर्क साइड और यूवी साइड? सर डाउनलिंक है। हाँ बाकी लोग इन्वॉल्व हो आंसर देने में, डाउनलिंक है अपलिंक है? डाउनलिंक में सर। संतोष डाउनलिंक। और नितिन और संतोष के अलावा बाकी और लोग भी हैं। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। और कोई आंसर देगा? ब्राइट सर्किल परफॉर्मेंस हेड बताइए। हाउ
UE identified the network. Chandra? सर हेलो। Yes, Santosh. हाँ सर, ये सिम यूएस से सिंक्रोनाइज होगा। सबसे पहले वो फ्रीक्वेंसी बैंड स्कैन करेगा एंड फ्रीक्वेंसी बैंड के अकॉर्डिंग वो जो सबसे नियरेस्ट होगा, जिसका आरएसएसआई पावर ठीक होगा, उसको स्कैन करेगा एंड देन आफ्टर दैट डिकोड करेगा पीएसएस एंड एसएसएस एंड उसके बाद हमारा जो मिब एंड सिब विल आइडेंटिफाई विद डाउन लिंक और देन हमारा रैच प्रोसीजर स्टार्ट होगा इसके बाद। तो ये रेज प्रोसीजर क्या अपलिंग है डाउनलिंग है? सर ये अपलिंक का प्रोसेस है। अपलिंग का प्रोसीजर है। यस सर। ओके, पहले अपलिंक होता है डाउनलिंक होता है? क्या जी सर? पहले अपलिंक प्रोसीजर होता है कि डाउनलिंक प्रोसीजर होता है? स्टार्ट पे डाउनलिंक प्रोसीजर होगा। अच्छा, ओके, नो इशू। तो Rahul, are you there? Yeah. I think Santosh, you Yeah. all have already joined our course, right? Yes, yes, yes. यस सर। Yes. Okay, okay. That's why I just want to know. Like in last few class only, I have discussed this topic. That's why you are able to explain. No sir, I just Okay, attend good the to know. last two lecture. Yeah, yeah, good to know. Good to know. Yes sir. Then why are you taking demo again? No sir, that was I just want to know about the course details in the Okay, class. okay. Maybe you can discuss in offline as well. So no issues. So hi guys, Rahul this side. So I am your trainer today, and I will take care of this demo session. Okay. So I am having more than 12 year of experience in the same domain. Okay. Let me share my screen. So today I will tell you like basic things like what is protocol and how we define this protocol. Okay. What all things we have in LT, how these things connected with each other. These basic things we will discuss, and what is like your job responsibility as protocol testing engineer. Okay, and in which area we have vacancies, in which area we have opportunities. These things we will discuss. Okay, nothing technical in depth. Okay, just overview of the field, overview of the protocols. Okay, these things we will discuss. So feel free to ask guys if you have any query. Okay, so able to see my screen, guys? Yes, sir. Yes. Okay, Yeah, it's visible. okay. So I think आप में से काफी लोग उसमें कर रहे हैं. Okay, so I will try to cover in Hindi, English both. Okay, so feel free to ask if you have any query. Okay, so I think most of you are not aware with like what is protocol. Okay, so our first question is in same, what is protocol? Okay. So I think some of you have answered like protocol is set of rule. Okay, answer is protocol is set of rule, right? So as per book language or as per word to word definition, this is correct. Like protocol is set of rule, and in our domain, in our communication domain, what all set of rules we have, that we will discuss. So okay, so suppose we have predefined rule, predefined set of rule. Okay, हमारे पास में कुछ rules हैं, कुछ already defined कुछ processes हैं, है ना, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जिसके help से हम क्या करते हैं, with the help of these rule we will be able to communicate within nodes, one node to another node. Okay, so I think suppose for an example, this is your e node B. Okay, this is my e node B. Okay, and this is my UE.
Okay, so how this UE means user equipment, my mobile. Okay, okay, so how my mobile will communicate with inode B? Well, what all processes it will follow to communicate with inode B? Okay, so this is protocol. Okay, it will follow some process, it will follow some message sequence. Okay, it will follow some predefined things. Okay, between this one. Okay, means suppose you is sending some message A. Okay, for an example, यू ने एक मैसेज ए सेंड किया, ठीक है, तो इनोड बी को पता होना चाहिए कि उस मैसेज ए का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मैसेज ए. आफ्टर दैट ओनली इनोड बी विल check this message and response accordingly. Suppose the response of this message is B, for an example. So this is fixed. So whenever you will send any message A, inode B will answer the query with message B. This is protocol. This is fixed. Okay, so protocol क्या है हमारा? The set of rules. This is like predefined rule, or these predefined rule we will use for the communication and for the interaction of the between two nodes. Means here we have two nodes, E node B, MME, any of the LT node. Okay, means UE, E node B, MME, HSS, PGW, HGW, any of the E node B. Okay, so these are the interfaces, these are the protocols we have. Okay, so we have some predefined rule, and each and every chip operator, each and every vendor have to follow these rule. Okay, okay, doubt guys, any doubt? I mean, this is like I'm explaining this term only, what is protocol, not in the technical manner, just that this term, what is protocol. Any doubt? Clear this term? Yes, sir. Yeah. Clear. Yeah. ठीक है. अब अच्छा एक और एग्जांपल मैं देता हूँ. सपोज दो बंदे हैं, ठीक है, इसको कोई लैंग्वेज आती है इंग्लिश, इसको कोई लैंग्वेज आती है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश प्रोटोकॉल है, यहाँ भी इंग्लिश प्रोटोकॉल है, देन ओनली दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? इन इंग्लिश दे बोथ कैन कम्युनिकेट, ठीक है, तो विच प्रोटोकॉल दे आर फॉलोइंग? इंग्लिश. ओके, सो इंग्लिश में अब अगर डेप्थ में और जाए तो प्रोटोकॉल क्या है? ग्रामर, राइट? रूल्स कहाँ डिफाइन है? ग्रामर में. तो विच प्रोटोकॉल यू आर फॉलोइंग? इंग्लिश. एंड वेयर वी डिफाइन दिस प्रोटोकॉल्स? ग्रामर, है ना? तो रूल्स क्या है? ग्रामर्स में है. तो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? इंग्लिश. एग्री? अब सपोज इन अनदर एग्जांपल, ये तेलुगु है, ठीक है, ये कन्नड़ है, ये फिर ये इंग्लिश है, ये हिंदी है. ओके, मीन्स we have defined some different protocol here and we have defined some different protocol here. Okay, so they both can't talk to each other, right? Communication will not happen in this case. Agree? मतलब अब ये दोनों को अलग अलग लैंग्वेज आती है, इसको कोई और लैंग्वेज आती है, इसको कोई और लैंग्वेज आती है, इसको कोई और प्रोटोकॉल आता है, इसको कोई और प्रोटोकॉल आता है. तो क्या ये कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में? नो कर सर. सकते हैं? नो, है ना? तो ये No, दोनों sir. कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा कि सारी एंटिटीज को, सबको प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा जो भी डिफाइन होगा, ठीक है, तभी वो दोनों नोड एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर दिस पार्ट, व्हाट इज प्रोटोकॉल? यस सर. नाउ नेक्स्ट इज हु डिफाइंस दिस प्रोटोकॉल. ठीक है, now we are aware with this protocol, like we have some term protocol, we have some set of rule, है ना? So who define this protocol? Who define this set of rule? Who define this rule? Anyone?
think 3GPP. Yes, correct. Okay, so 3GPP. 3GPP is third generation partnership project. Okay, so in 3GPP we have some government bodies organization means representative, or some person, some representative from government organization like DOT. If I take example of India, DOT, Department of Telecommunication. Okay, some research institute. Okay, for example IIT and NIT. Okay, so nowadays IIT Hyderabad and this one Kanpur aggressively working in this one 5G research, developing 5G test beds. Okay, so these institute. Okay, third one is some leading R&D companies. Okay, like Qualcomm, RGO, MediaTek for an example, Airtel, Ericsson. Okay, like these companies. So representative from all of these bodies are part of this one 3GPP, and they do lot of discussion, they do lot of experiment. After that only they define the protocol, after that only they define these rules. Okay, and everyone in the system have to follow this rule. Okay, got it? Any doubt guys? किसी को कुछ पूछना हो? Clear? Yeah, it's clear. Okay. Now, how many protocols we have in LT? Okay. Okay. So in LT, we have 3 layer. Okay. Layer 1, layer 2, and layer 3. Okay. So how many protocol we have? Let me draw. Okay. So these two protocol, RRC and NAS. Okay. This is part of layer 3, upper layer protocol. And majorly these two protocol is responsible for signaling. Okay. Control signaling. Okay. These two, sorry, 3, 1, 2, and 3 is L2 protocol.
layer 2 protocol, and this is L1 protocol. Okay, so two protocol we have in L3, NAS and RRC. Three protocol we have in L2, PDCP, RLC and MAC, and one protocol we have in L1, 5-layer protocol. Okay, so majorly these two protocol is for control signaling, or okay, and rest of these are user plane. Okay, so this is for an example we have UE. Okay, okay, so in UE we have L3, L2, L1, NAS, RRC, PDCP, RLC and MAC and 5. Okay, but in E node B we have at L3 layer only RRC protocol. Okay, L2 is same, PDCP, RLC, MAC, 5 is also same, L1 is also same, only one protocol 5. Okay, so where we have NAS protocol at MME, at MME. Okay, NAS is core level protocol. Okay, that's why we have NAS protocol at MME side. Okay, so one more thing, so this is the protocol, all the protocol we have in LT. Any doubt guys in this? Anyone? Guys, any doubt? No. Okay, okay, one thing, so these many protocols we have. Second thing, suppose this is RRC, this is RRC, so the same protocol can communicate or decode the message whatever we are sending from same protocol. Okay, ठीक है, कि मतलब suppose यहाँ पे आपने RRC से कुछ मैसेज सेंड किया है ना, RRC से पैकेट सेंड किया R, है ना, ये R पैकेट है, ठीक है, तो ये R क्या होगा, अब डाउनलिंक में जाएगा, ये डाउनलिंक में, सॉरी अपलिंक की बात करते हैं, यूई से जा रहा है, सो अपलिंक और डाउनलिंक क्या होता है, वट एवर DL, UL, anyone? What is DL direction? What is UL direction? Who will send the message and who will receive the message in DL and same in UL? कोई भी बताएगा? What is our DL direction and what is our UL direction? DL is like coming from network and UL is going through UE. Okay, okay, correct. Okay, so UL means UE is sending, E node B is receiving, UE to E node B. DL means network to UE. Okay, so I am here taking example of UL, means UE is sending. Okay, and UE is sending some RRC message. Okay, so the flow will be like that. Okay, here from top to bottom layer, then here we have antennas, this interface, air interface. Okay, air interface, and these messages known as OTA, over the air. Okay, over the air interface, over the air message. Okay, now our E node B will receive the messages, and from bottom to top it will pass that message to RRC, and now only RRC can see we have one packet, and what information we have in this packet, R. Okay, so only RRC message can send, means RRC can decode the message if RRC is sending. In same way, it is applicable for all the layer. Suppose here we are sending the message R, means any payload R or any information R, and RRC is sending this information. So this phi
cannot decode that information. Phi only can pass this information to relevant layer. That's it. ठीक है, मैं समझ में आया कि सपोज आप कोई भी लेयर एक इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है, तो जो दूसरे एंड पे, रिसेप्शन एंड पे, है ना, जो वो पर्टिकुलर लेयर है, वही उस पैकेट को डिकोड कर सकती है, वही उस पैकेट को चेक कर सकती है. ओके, गॉट इट guys? Clear? Yeah, got it. Clear. Yeah. Okay. So next, for an example, you are sending NAS. Okay. So here the process is, as we don't have a NAS layer here, so we will piggyback this message into RRC. So the packet will look like that, one RRC message, and in RRC message we will have the nice message. Okay, and again same process, we will send this message air interface. Okay, so when this will receive this message, RRC will receive this message, RRC will decode, yes, we have an RRC message. Now inside RRC message we have a NAS message. Okay, so NAS message RRC will directly pass to the MME via S1AP. Okay, now NAS only able to decode this packet. Yeah, we have some information. And okay, got it? Any doubt, guys? Anyone? No, sir. Anything? No, sir. No, sir. ओके ओके, तो अब थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे काम करते हैं, हल्का फुल्का, डेप्थ में नहीं. Yes, sir. ओके ओके, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ क्विकली कि ये वर्क कैसे करते हैं, व्हाट इज अवर डे टू डे एक्टिविटी, है ना, व्हाट इज अवर responsibility as a protocol testing engineer. Okay, in that one you can ask questions like if you have any related to vacancy or work or anything. Okay, so suppose in general scenario, okay, Oppo, one handset making company Oppo wants to release a mobile phone or release a phone, okay, with some feature, 1 2 3 some feature. Okay, so here LT band 41 support, CSFB, handover. Miss, I'm writing down some of the feature. Okay, CA for an example. Okay, carrier aggregation, and suppose something related to camera, some specification of AV. Okay, audio video, this thing. Okay, so now what they will do? They need Oppo need one chipset. Okay, so we have two option of chipset. Which one? Qualcomm and MediaTek. Two option we have. Okay, so in flow they will select one option, either Qualcomm or MediaTek for their handset. Okay, so suppose they have selected Qualcomm. Okay, now Qualcomm have project from Oppo. Okay, now what Qualcomm will do? Qualcomm will develop a chipset, a product for Oppo with this specification. Okay, so what Qualcomm will develop? Qualcomm will develop one hardware plus one software. Okay, one hardware and one software. So we are part of software team. Okay, we are part of which team? Software team. Now in software domain we have two entity. First one is development, second one is testing.
Okay, first one is development, second one is testing. Okay, so in development we write a code. Okay, in C, C++, any language. Okay, C or C++, any language, we write a code of these features, of these support. Okay, so suppose they have completed a code with this feature, like they have completed the feature, this all feature. Okay, so as a tester, so what we are doing, testing. So we are part of this team. Under software, we are part of testing team. Okay, so what we will do, suppose now development team provide a code or a build to test, like with this support. So what we will do, we will test this feature, we will test these things. Okay, this scenario. So now as a tester, what I will do, suppose LT attach. So first thing is our UI should attach with the network. Okay, first thing LT attach, second thing CSFB, third is handover. For an example, I will check this thing, I will write down the case, I will check the process, I will check the messages in. Okay, in this one. So suppose I am getting some issue in LT attach, मीन्स अब जो मेरा फोन है वो LT के साथ में अटैच नहीं हो रहा. ठीक है, आई एम फेसिंग सम इशू while attaching with LT network. सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इशू रेज कर दूंगा डेवलपमेंट टीम को कि मुझे एक इशू आ रहा है. ठीक है, इशू कैसे रेज करता हूँ, एक जीरा करके टूल होता है ना, जीरा, ये बग रेजिंग टूल होता है. बग क्या होता है मेरा, व्हाट इज बग, बग मीन्स एनी इशू इन सॉफ्टवेयर. ओके, एनी इशू इन कोड, दैट इज माय बग. ठीक है, तो मैं जीरा रेज कर दूंगा और बग रेज कर दूंगा, इसमें बग डिटेल डाल दूंगा कि क्या क्या मुझे इशू आ रहा है, मेरा LT अटैच नहीं हो रहा है और मुझे कुछ फेलियर वगैरह दिख रहा हो तो वो सब मैं डाल दूंगा. ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल डाल दूंगा. तो ये जो डेवलपमेंट टीम होगी ये क्या करेगी, दे विल वर्क ऑन दैट बग, दे विल ट्राई टू फिक्स दैट बग एंड विल प्रोवाइड मी द again version. Suppose this is version 1, now they will provide me to the version 2. Okay, now again I am suppose getting issue in at this time in second thing. Now like this issue fixed and I am getting issue in CSFB. Okay, when CSFB is not happening, CSFB is not happening. Okay, so again what I will do, I will raise issue my bug 2 related to CSFB. I will provide some information. Again, what this development team will do, they will again provide me the software version with the fix version 3. Okay, for an example. Okay, now in this one, in this version, all the things are working fine. Means all these feature are working fine. So what I will do, my software version 3 is kind of working fine for me. Okay, so what I will do, I will release that software version to Oppo. Now Oppo will again test, Oppo will again do the testing in their environment, in their with the help of their test setup, and will verify the code. Okay, and suppose again they will find any issue, they will get any error or any bug, so they will raise those bugs to the Qualcomm or the MediaTek. Okay, so this is the basic flow which we follow. Okay, clear? Any doubt guys in this? So roughly if you can see in Oppo, in Qualcomm, after that Qualcomm outsourced some all of these companies can outsource the employee from service-based company. Service-based company means we have TCS, Capgemini, Infosys, L&T, okay, and many more company, TrueMind, or these are some small vendors also we have in this company. Okay, so we have vacancies in this company. Roughly these are some of the, in this example I am taking some of the name, many more companies also we have.
So we have vacancies in these reputed company, in these uh, big companies, we can say. So any doubt, guys? Like what is protocol testing? What things we do as a protocol tester? Anyone? Any doubt? कोई भी किसी को किसी तरह की कोई वो हो, confusion हो, कोई doubt हो? Clear? Yes, sir. Okay. Yes, clear. Okay. So the next thing is first thing is like how many type of testing and these thing we have. So first we have sanity check. Okay. So sanity means suppose these four feature. So I will take 1122 feature from all of these feature. I will take 10121 test case to check the functionality. Okay, means these feature are working fine. Means 1 2 test case I will check. Okay, 1 2 test case I will check. Then second one I have suppose second one I have stability. Stability means suppose these 1 2 test case is working fine, means our feature is ready, our feature is working fine. So what I will do, I will test for long run. means मैं क्या करूंगा, स्टेबिलिटी चेक करूंगा कि सपोज 1 hour के लिए, सपोज ओवरनाइट के लिए, या फिर और किसी लोड के साथ में कि मैं कॉल भी कर रहा हूँ, कॉल के साथ में मैंने कुछ और रन कर दिया, मतलब 2 3 प्रोसेस मैंने एक साथ चला दी, कैमरा भी ऑन कर दिया, सब कुछ कर दिया है ना। तो स्ट्रेस एंड स्टेबिलिटी में करके चेक करूंगा कि वो वर्क कर रहा है मेरा प्रोडक्ट कि नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट को हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में वर्क करना चाहिए, राइट। तो मैं ये चेक करूंगा, ठीक है। थर्ड वन क्या हुआ, regression. These are like kind of name of the testing which we generally do. Okay, regression means suppose you are getting some issue with in some particular scenario or in any particular case. So what you will do, you will try to test that particular scenario, that particular feature a lot. Okay, so you will perform the testing, you will design the test case around those feature. Okay, that is my regression testing. Okay, again, environment, testing environment. Based on the testing environment, we have things. First one is lab testing, and last one is my field testing. Okay. So what is difference between these two? Field, हाँ बताओ सर रिपीट अगेन सर, क्या हुआ? एक बार फिर से repeat कर दीजिए। ठीक है, okay. So based on the testing types, we have some testing type. Okay, like sanity, stability, regression. Okay, these three, majorly these three. Okay, and one more we have like performance testing. Okay, means many we have. Okay, so insanity is kind of suppose you have one feature CA, carrier aggregation. So you will check 1 or 2 test case, 1 or 2 time you will check, and if those test case is working fine, means your base feature is ready, means your base feature is working fine. Okay, that is my sanity. मतलब जो भी मेरा feature है वो work कर रहा है, बस that's it, है ना। मैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं करूंगा, बस मेरा क्या है मिनिमम सेट ऑफ टेस्ट केस चलाऊंगा, मतलब ये क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
कि वो वर्क कर रहा है. दैट इज माई सैनिटी. ओके. व्हाट इज माई स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी में क्या करूंगा कि वो चल तो रहा है, बस कितनी देर तक सही चल सकता है ना, मतलब लॉन्ग रन. ठीक है. सपोज मैं 1 आवर चला दिया किसी टेस्ट केस को, या फिर ओवरनाइट चला दिया अगर मुझे ज्यादा चेक करना है तो. ठीक है. ओवरनाइट चला के देख लिया, अब वो इतने पे भी सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, मीन्स मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है. that product is stable. If that product is able to handle that much of long run, overnight run, or means any long run, if that product is able to handle that long run, means my product is stable. Okay. Third one is regression. Regression means suppose we just to test one particular feature a lot. A lot means in depth and each and every combination, each and every scenario. So you will perform the regression testing. Okay. After that, based on testing environment, we have two type of testing. First one is lab testing, second one is field testing. So what is the difference between two? In lab, suppose this is my UE or this is my DUT. DUT means device under test. Okay. Whatever we are testing, that is my DUT. So in my example, my DUT is my UE. Okay. So what I will do, I will test my DUT. So always I need to test one UE, always I need network, and to test network, always I need one UE. है ना. मुझे अगर नेटवर्क टेस्ट करना है तो मुझे UE चाहिए, मुझे UE टेस्ट करना है तो मुझे नेटवर्क चाहिए. मतलब ये दोनों चीज चाहिए ही मुझे. कोई भी टेस्टिंग जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे इन दोनों चीजों की जरूरत है. राइट. मतलब मैं नेटवर्क के बिना यूई कैसे टेस्ट करूंगा? यूई का बिहेवियर ही जब मैं नेटवर्क में टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं करूंगा कैसे चेक, है ना. सेम वे मैं अगर कोई नेटवर्क टेस्ट कर रहा हूँ तब भी मुझे यूई चाहिए, है ना. सो मुझे ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है. तो लैब में मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज मेरा यूई डीयूटी है, अब मुझे नेटवर्क चाहिए, तो मैं क्या कर यूज कर सकता हूँ? सिमुलेटर यूज कर सकता हूँ. सिमुलेटर अगेन कुछ डिवाइस रहते हैं, है ना, जो नेटवर्क की तरह बिहेव करेंगे. दैट इज माई नेटवर्क सिमुलेटर. So I can connect my UE with network simulator and can test, or I can configure any network condition, any network environment in lab only. Okay, no need to go outside. So everything I can control here. Okay, every parameter, every feature, and the scenario, everything I can configure. So that is kind of lab environment. Means we are testing our duty with simulator. Okay. On another hand, in field, on field, what we can do? Suppose this is my UE, my DUT. I will go and test with real node B. Okay, this is my real node B. So I will test with real node B. Okay, but here one major difference is here I can control each and every parameter. I can control the radio condition. I can control the radio parameter, related parameter. But here, whatever we are getting, what it is, it is. ओके. जो भी हमें मिल रहा है सो मिल रहा है ना. हम मतलब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें. ऐसा नहीं है कि आप फील्ड में गए और आप कॉमर्शियल नोट भी को चेंज कर सकते हो. कुछ कॉमर्शियल नोट भी जो है सो है ना. प्लस आपके सामने इंटरफेरेंस की कंडीशन आएगी. सपोज कुछ ब्लॉकेज आ रहा है या फिर कुछ और जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो भी चैलेंजेस रहेंगे फील्ड में वो रहेंगे आपके सामने. ठीक है. यहाँ पे आप बहुत कुछ ज्यादा चेंज मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते. बट यहाँ पे लैब में आपके पास में क्या है कि सारा कंट्रोल है. ओके. सर लैब टेस्टिंग का कैसे क्या रहेगा? एक्चुअली आजकल तो क्वेश्चन भी लैब टेस्टिंग से ही पूछे, तो वो प्रैक्टिकल रहेगा या कैसे रहेगा? हाँ, प्रैक्टिकल हम आपको ओवरव्यू देंगे. ठीक है. ओके. वो पूरा आपको बताया जाएगा ना. बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट आपको हम बता देंगे प्रैक्टिकल सेशंस में. ओके. एनी अदर डाउट गाइस? एनीवन? क्लियर? Is it field testing? What the way of the field testing? Can you repeat it? Means what we do in field testing. Yeah. Okay. So in field testing, basically
this is my UE. UE means my handset, my mobile. Okay. So I want to test my mobile. So I need one network. Okay. So I need one network. Okay. So in this network, so in this case, field testing, I will check my UE with commercial node B in field. Okay, means here I can't control the parameter, I can't control the radio condition. Suppose here I am having one building. Okay, so I can't Okay. do anything with this building. Nearby frequency, so I can't control this thing, right? Yeah. Yeah. Right. So in field testing, I'm testing my UE with real node B, means in field environment, whatever I'm getting, whatever radio condition I'm getting. But in lab testing, I'm testing my UE with some simulator. So here I can control everything. Suppose here I am getting uh, RSRP 90 dB, okay, minimum 90 dB. So I can't do anything, means whatever I'm Yeah. getting is the final. Okay, but in lab I can configure. Suppose I want to configure 70, so I can configure. I want to configure 80, I can configure. So I have the control. Okay. Okay. Okay, any other question, guys? So this is the basic, okay, of what is our day-to-day activity, kind of what all type of testing we have, and how things runs, what is like testing team and development team. Okay, what all protocols we have. So if you have any query, you can ask now. Okay, 1 second, guys, give me 1 minute. I'm unsharing my screen, guys, for 1 minute. Okay, I will show the syllabus. I'm sharing screen again. Okay. Okay. So this is in this syllabus, we will cover 5G. In this course, we will cover 5G, ORN and LT. Okay. So, and this is kind of combined course of 5G, ORN and LT. So if you want to cover LT and 5G only and ORN only, that is also possible, and you can discuss it with us later. So from summary and like basic
key feature of our courses, we will definitely have live sessions and recording of that live session. Suppose if you missed any session and if you want to revise any session, so we have recorded sessions, we will provide you based on request after session. Okay, so after that, tool wise we are having proprietary tool from Qualcomm like QHDM and QCAT we have. Wireshark, this is open source tool we have, and from now we have MediaTek based tool ELT, that is also we have. So we will show you these tool, and we will give you the basic overview and basic idea of log analysis on this tool. Okay, so we will have the practical session on this tool. Okay, so after that, lab sessions. In lab session we will show you the what type of lab setup we have, how we perform the testing in this lab, what all components we have, and like basic requirement, a basic overview of the lab setups. Okay, so we will provide you the support in resume preparation, Naukri profile, like what all keywords you should pick while updating the Naukri or LinkedIn profiles. So these things we will provide you. After that, like some demo interview sessions we have. Okay, so like suppose you have completed some number of topics in a month. Okay, so after 1 month we will have some demo interview, some demo discussion with you. So in that way you will be able to analyze your study progress. Okay, and after completion of course, based on our uh, connection or based on our references, we will try to schedule at least 2 interview for you guys, that is for sure. Okay, so if we get any other opportunity, definitely we will try to help you, but definitely 2 interview we can schedule for you. Okay, and like in interview preparation and practical session, we will provide you the, as I told you, session or lab setup description, type of testing we have in detail, test case designing, and some we have predefined questions like drafted question, those we will provide. So those questions we have like what generally we ask as an interviewer, and like our earlier batches faced those questions नहीं in नहीं their नहीं interview. डिनाई करो डिनाई करो डिनाई Hello. कर दो Okay. So this is our 5G content. Okay, so like 5G introduction, use cases of 5G, in which area we have use case, then architecture, deployment options. So we have different deployment option of NSA, those things. Okay, then architecture, different what is like network slicing in 5G, bands ranges. Like earlier we only have one band range in case of LT, but in 5G we have different two band ranges, different two frequency ranges, sub 6 and millimeter wave like FR1 and FR2. So those thing we will discuss. Okay, supplementary cases, downlink, uplink, then numerology, one of the key feature of 5G. Those things we will discuss. Frame structure definitely, signaling radio bearer. Okay, and basic overview of each and every layer. So those things we will discuss in 5G. Okay, in short I'm just showing you. Okay, like 5G call flows, uh, each and everything beamforming, and these are some of the key feature. So this cell search procedure of 5G, or what you can say for call flows of 5G, those things we will cover in 5G part. Okay, so in ORAN, quickly we will cover like what is ORAN, how many split options we have, what is the advantage of 5G. Okay, those things. So in like earlier we had RUC, sorry, DU plus antenna. Okay, let me show you if you are not aware. In your traditional RAN, what we are following here, you have suppose one antenna. Okay, this is your antenna. Okay, and with that antenna you have one RU. This is antenna. This is my RU, RRU or RRH, anything. Or here we have baseband unit. Okay,
and connected with CPRI, right? Like that we have, agree? But in case of 5G, with the help of ORAN, what we can do? So this one is my RU. Suppose again antenna. This is my, suppose RU radio unit. Okay, so this baseband unit or BBU, we have split it into two parts, CU and DU. Okay, and we can deploy these two on cloud. Okay, we can deploy these on cloud. So what we can do, suppose here we have one RU and some remote location, we can connect this with DU. Node to set up, just downside of E node B. We don't have such restriction in 5G. Why? Because of ORAN. First thing. Second thing, suppose in traditional RAN, you are using Samsung RU. Okay, so you have to use Samsung only equipment, Samsung only BBU. But here, in case of ORAN, suppose you are using uh, Samsung RU, so you can use DU from Ericsson. You can use CU from Nokia. Like that you can. So no need to rely on the one vendor, on the same vendor. This is the main difference between traditional RAN and ORAN. Okay. So this part we will cover. Okay, like CU, DU, RU. RU is kind of radio unit. You can compare with RRH for now, and CU and DU is part of BBU. Okay, baseband unit. Okay, so different split options we have, and like what all challenges we have: non-real time RIC, real time RRC, है ना? These things we will cover. Difference between eCPRI and CPRI. So like earlier in LT, we are using CPRI protocol, but in this one 5G ORAN, we have eCPRI protocol. Okay, so these things we will discuss. One is showing the option the lab setup. Is this the lab setup? What No, no, we do there? we will explain like what all type of lab setup we have, how we set up the what all connections we have, what all entities we have. Okay, so overview will provide you. Okay, suppose like Okay. CODU RU you are aware with. Suppose we have explained you what is CU, what is DU, what is RU. Okay, but at the time of testing, how you will set up these things. Okay, practically, or you will test and what all DUT you have accordingly. Okay, Rahul, yeah, yeah, we'll show some tools so that he can understand what we have going yeah, to sure. teach So on quickly, tools. let me cover Okay. Yeah. this LT. Okay, so in Yeah. LT, each and like we will start from very basic. Okay, so what is testing cycles? Okay, testing setup, test case description. Like these are part of practical session. So from initially like architecture in network elements of LT. Okay, what all protocols we have, what all interfaces we have in LT. Okay, LT bands, frame structure. Okay, TDD frame structure and FDD frame structure. Okay, bandwidth, then physical channels in LT. Okay, these thing. Okay, this is part of synchronization. Okay, earlier asked me the one question: how we synchronize with the network? We initial power on. Okay, PSS, SSS, MI, BSIB, and these things. Okay, after that RACH preamble, why we require RACH in detail. That is the one of the key feature of LT. Okay, of not only LT, of any technology. To achieve the synchronization we follow. Okay, this is again part of the power on procedure, how we establish the RRC connection, what all things we have. Okay, then each and every functionality of each and every layer, like this is like MAC layer processes.
Okay, THR, BSR, SR, HAR. Okay, so these things we will cover. Now I think we can show you some tools. Yeah, now yes sir, you can process. Yeah, stop your screen. Will share my screen. My screen is visible. Yes, sir. Yeah. So guys, this is a Yes, Logel tool. Belongs to Rahul. You can elaborate. Okay, so in this tool, like how we will cover, first let me explain. So suppose we are covering one topic. Okay, we are covering one topic and thoroughly we have covered like this message. In this message we have this eyes. Okay, for an example, this one MME, sorry, MIB. So MIB first we will cover thoroughly in class, like what is the MIB, what is the periodicity of MIB, on which channel mapping we have MIB, then we will cover it on tools. So the same thing, whatever we have covered in theory classes, we will try to see in log. Okay, real time log. This one, like in what MIB, we have all what all information we have in MIB. Suppose this one is SIB1, so what all information we have in SIB. So those things we will see in tool. So this is one of the tool, Logel. Okay, so in that way you can see the things like here you can see the uh, SIB, like RACH related information, RACH configurations, RACH index, or these things. So first we will cover in theory classes, then you can see in tool. So like how these things look like in tool. Okay, so that's how we will cover. So this is the one of the tool, Logel. Now, Deepak, share your screen with other tool. Okay, so this is QXTM. As I told you, this is QXTM. So like here you have one message, UE capability. So each and every message you can see, these are OTA messages. Okay, so we have clicked in for now on this one, UE capability. So here downside you can see each and every information we have in that particular message. Okay, so like that we will try to cover in practical session. So in that way, both theory as well as practical we can cover. Okay, any doubt guys in that part, in that front? This is QCAT. Okay, again Qualcomm specific tool. So ELT, QCAT, QXDM, Logel, Wireshark. These all tool we have and we will try to cover. It's nothing major difference between these two. Just we will try to show you, means just for your so you will get familiar with this tool. So definitely these things will help you in your and QCAT, Logel, and the third one is QXT and Wireshark. ELT is MediaTek. Let me write down if you 1 second. Share my screen. Okay. Rahul just met. Will show Wireshark as well. Okay. So Okay. that Okay. Okay. now Wireshark is going to open where we have 4G as well as 5G log all. Okay. So this is Wireshark tool, guys. Okay. So in that one you can see the flow. So again, in same way, same pattern. Downside you have the eyes, the information, whatever we are having in that particular message. Okay, and the flow, like what is the source IP, destination IP, and flow, which node is sending the message, all the things, all the mappings we can see in this tool. Stop. Okay, now I'm sharing screen just for a second. Okay, so let me again write down from tool fund. MediaTek, we have ELT. These all are proprietary tool. So our teams are working in field. We have some live working projects. So that's why we have all the access of this tool. So for Qualcomm, we have QXTM and QCAT. Okay. When we have Logel,
when we have Wireshark. Any doubt, guys? Also, if required, we'll arrange some Samsung related tool like Xcall and Xcap. Okay. So if you have any doubt, you can ask. Rahul, please guide to all in work in which chipset maker company is there and oh, service based company in which Okay, company is going to place in future if one is second. One second. yeah. Okay, give me 1 minute. Give me 1 minute, guys. I'm just trying to see one slide I have. Meantime, if you have any query related to anything, you can ask me. We have time. For these tool, so when you giving the training for the these tool, we have total session of the tool. They have only we can see that only the how the That means process. everything, yeah, the process and so for everything, first we will try to cover theory session. Okay, means the what is Okay. the flow. Okay, after that it will be very easy for you to understand the tool or the packet or whatever we are having. Okay. Okay. Uh, Hello, Rahul. From the tools like messages you have shown, you will be covering all the IEs related, like Yes, all timers the and everything. You yes, all the is cover. So guys, like generally it's like common question. If you are taking interview, you are concerned about the things, but it's not that much hard for us. If we are having tool, if we are having the, if we are covering something, so it's like very normal things, we can easily cover this thing. Okay, so rest assured from that front. I have one query about that. I have not worked on these tool in the past. So Hmm. when the interviewer is asking to that, you have no experience about that, the how to weigh. No, no, those things we will cover, like how to manipulate in interview, how to show your experience. Those things we will cover. Is how to Okay. iterate that answer. Okay, how to construct your answer. Okay, Okay. this is Okay. separate thing. Hello, sir. Yeah, Sir, I have already working in RF optimization field, and can it be helpful me for to join in protocol testing? yeah, definitely it's very helpful for you as Then how will actually crack the interview, because they are always asking that they are seeking a person who is already working in protocol testing field. well. But So suppose I have so suppose you are working in this one. I have worked in RF optimization from past 10 Okay, years actually. yeah, okay, no issue. Okay, we have placed around 15 or 16 years, if I'm not wrong, Aarav, right? Last 20 years experience working in a Vodafone got placed in Qualcomm. So whatever you are doing will manipulate in your CV at least 2 years. If suppose your experience is 10 years, will manipulate around 2.5 years or 3 years. If a candidate having experience 5 to 6 years, will manipulate 2 years.
Minimum 2 year will manipulate in your CV whatever we are going to teach you in next 4 months. This whole thing will put on your CV, and all tool based exposure will help to crack the interview, because mostly telecom candidates are going to shift their career in protocol testing, so no worry about it. Mm-hmm. So I'm sharing a screen. Okay. Because you What is are the always timeline of the course? just give me 5 minutes, Rahul. Let him complete, then we'll discuss all Okay. whatever you have. So Okay. guys, these are like all the companies we have. Okay. So not all major companies. Okay. So like from chipset point of view, Intel, Xilinx. Okay. These many companies we have. Like I will add like this one, Broadcom, Qualcomm. Okay. I'm adding whatever missed, and MediaTek. Okay, so from chipset point of view, in these company we have vacancies. Then from RRU, or like these are the some of the vendor. I think you know Nokia, you know NEC if you heard the name. Okay, Fujitsu if you have the name. Okay, so these are the companies working in the this field. Are you side? Then software stack. So from stack type is stack side, what we mean, suppose we have RU, like I'm giving example of 5G. Okay, suppose you have DU. As we know, we are working at cloud. Okay, so we have separate companies which all are working at to integrating these functionalities on cloud. Okay, for an example, HP, Dell. Okay, these companies are also working in this area. Okay, nowadays. Okay, apart from that, like Parallel Wireless, LT Star, Mavenir, Radius. Okay, Ultron. I think some of name you have heard, right? Then one second. There are some service and support based companies, like okay, like service based companies means these companies don't have any what we say product. Okay, they are just supporting the companies to developing their project. Okay, like for an example here, uh, Ultron, Majorly, Tech Mahindra, Amdocs. Okay, these are Mitra, Star. These are the companies. Apart from that, TCS, L&T, Infosys, okay, and some small companies, not like growing companies, TrueMind, okay. These are some of the companies, okay, working in this field, service based. Then like some of the leading IT companies, if you heard the Accenture and one more, I forget the name. Those are also investing in the RAN domain. Why? Due to ORAN. In ORAN, they are like cloud is kind of core part of software domain or IT domain. So they, due to this one, they are investing a lot nowadays in ORAN or in 5G. Okay. So these are some of the companies which you can see here are working in, like apart from these, we have operators, Airtel, RGO. If you have heard, so anyone from RGO here? Yeah, this is Sanjay Gaikwad from RGO. Okay, so in RGO, we have one team, Rancor, if you have heard the name. Rancor. Bhatnagar is the head of that team. Do you know Bhatnagar? Ayush Bhatnagar and these guys? No, no. Actually, I'm Oh, from MP. okay, you are from MP. Okay, so in I'm talking about the Mumbai location. Okay, so from He any regional team, I think Geo on an average is giving hike of 6%. Okay, annually, right? Right?
5-6% or 7%, I think, on an average they are providing. Yeah. We have this particular team, the name Rancore team. They are like part of this one protocol testing team. They are getting 20-25% annual hike. Why? Because they are doing the R&D. They are kind of backbone of the all of these research. That's why they are getting this much hike. Okay, so see the difference. Suppose here 30 people doing the same work, like in regional, 300 doing the same thing. Not the same thing, just verifying the thing. But they have developed, they have researched, they have tested the thing. After that only they have developed or deployed the things in regional, like I think you called some JC or some geo center or something. Okay, each and every geographical location, like nearly in each and every district nowadays we have having these geo offices. Okay, so only these 30. So suppose we have budget of, for an example, 1 lakh for these 30 people, same 1 lakh we have for these 300 people. Definitely they will get more hike, right? So here you can see the difference. This is just for an example. Okay, means you can see if you just want to validate my word. So we have one team Rancore, where Mumbai, RGO headquarter. Okay, there you have Rancore team. There you can just verify that Ayush Bhatnagar is the main person. LinkedIn you can see. Okay, so in the same company they are getting 20-25%, but normal like in RF field, you people are getting like comparatively less. Okay, so these are the working area front, in which area, in which company we are getting the vacancies, we having the opening. Okay, so any doubt, guys? Now comes on question and answer. Okay, yeah, you can ask Guys, if you have time. feel free to ask question. What you have in your mind to ask, you can ask. Sir, what's the course duration? Course duration will be 4 months, and weekend classes is there. Sir, is it daily classes or weekend classes? Weekend classes, and suppose you want to in weekdays, so weekdays 3 classes planned. Mostly Okay, for candidate prefer weekdays sessions mostly, because all are working candidate, no? yes, sir, yes. Okay. So both we have, depends on candidate. Okay. Yes, Sir, actually what both about we have, timings? based on your requirement only we can schedule. Okay. Sir, what about timings? Sorry, What about timings? When timings classes? in morning 8 to 10, Saturday 8 to 10, as well as Sunday. If any national holidays planned, on that time also will schedule classes, so that will deliver on time. Our all session based on a tool. Once a theory, then tool. Will not wait 3 month के 3 महीने के बाद मैं tool दिखाऊंगा. All session provide on tool, so that you can get better understanding about the technology. It also help for a better understanding. Will you provide any job security? Yeah, definitely I will get. Definitely you will get job if you putting your effort continuous 6 months or daily basis 1 hour or 2 hour, because selection always based on candidate. आप अगर नहीं पढ़ोगे तो how will get a job? Yeah, that one understand. Yeah, will provide the support till your selection. Whenever wherever is opening is there,
We'll share your CV because we have lots of connections in other companies as well. We are providing manpower since last 2 years Mhm. in company. So first I know where is the opening. So we'll refer my candidate after mock interview. We'll take your two or three mock interview. Okay. Then Mhm. I realize you are able to crack the interview. Then we'll share your CV for Okay. further process. Okay. One more question. How will you show my experience in CV? In which company you are working? Suppose I am working with Reliance Jio. Reliance Jio. Reliance Jio is doing same thing. Yes, You are doing. also doing same thing. बट आप मोबाइल लेके कस्टमर कंप्लेंट चेक करते हो ना, या थ्रूपुट चेक करना है तो आप करते तो हो अल्टीमेटली ना, थ्रूपुट डेटा रेट कितना चल रहा है। Yes, exactly. हाँ. आपके पास टूल भी है, एसक्यूएल के है ना, तो हैंडसेट में एक्सेल आता है आपके। हाँ आता है। तो आप और नेट वेलोसिटी है तो आप केवल ऊपर देख लेते हो कि यार 50 एमबीपीएस आ रहा है, आपको पीछे का बैकग्राउंड देखना है और हम वही दिखाने वाले हैं पिछले आगे के 4 महीने में। तो उसके बेस में आप मॉडिफाई करोगे, मैं मॉडिफाई करके आपका सीवी प्रोवाइड करूंगा। Will be वी हैव same. सेपरेट टीम। सॉरी। हाँ, but you will show my experience in other field, right? यस, अगर मैं एक्सपीरियंस शो नहीं करूंगा आपके सीवी में तो हु विल हायर यू? नोबडी इज हायर यू ना, बिकॉज Right. जियो कैंडिडेट का ऐसा प्रोफाइल है, कोई फील्ड इंजीनियर है, कोई सीनियर फील्ड इंजीनियर है, तो इनको कौन हायर करने वाला Yes, right. है ना। Under तो हम समझ उसमें गया, समझ. मॉडिफाई करेंगे, चीजों को मॉडिफाई करने के बाद ही अब क्या होता है प्राइवेट जॉब में ना, बंदा कभी भी लर्निंग लेके कभी भी जॉब स्विच कर लेता है। Yes, right. बशर्ते समझ अपने गया. को कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए कि 6 महीने तक यू हैव टू चार्ज योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट सही है. क्वेश्चन। ओके. राजेश किस सर्कल में हो आप? राजस्थान. राजस्थान में एक राहुल करके बंदा था, राहुल शर्मा, और लास्ट में एक नोकिया में गया था राहुल, कौन था वो? हाँ, राहुल था. टी था यहाँ का. हाँ, और एक बंदा और था अभी जो नोकिया ज्वाइन किया, जयगौड़. शर्मा, शर्मा करके, शर्मा, नाम याद नहीं आ रहा दोस्त अभी। Okay, मैं पता कर लूंगा कि नोकिया किसने ज्वाइन किया. अभी लास्ट 2 महीने पहले छोड़ के गया है कोई बंदा। और अभी महाराष्ट्र से 7-8 सिलेक्शन हुए हैं रिसेंट मंथ में। एमपी से कई फील्ड इंजीनियर, सीनियर फील्ड इंजीनियर गए हैं, कोई एनईसी ज्वाइन किया है, कोई अल्ट्रॉन ज्वाइन किया, कोई कैपजेमिनी ज्वाइन किया। सो आफ्टर मॉडिफिकेशन इन ही आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, नहीं तो आप भेजते रहो सीवी। इवन इवन आरएफ की ओपनिंग में भी ये जियो को का सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिक्सन नोकिया के साथ नो पोर्चिंग हो गई है हाँ, यस. एरिक्सन के है साथ. ना। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप सपोज करो नोकिया के साथ नो पोर्चिंग नहीं भी होता तो आपको 30% में हाइक करता, अगर आपका पैकेज 5-6 लाख के नीचे होता तो आपको 40% दे देता। राइट. लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका पैकेज अगर 5 लाख का है और कंपनी का बजट 10 लाख से 20 लाख का है, तो वो आपसे बोलेगा नहीं कि मैं 30% दूंगा। उनका पहला है बजट 10 लाख, अगर आपका नियर अबाउट 8-9 है तो फिर वो सीधा 17-18 पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चंदी चोरी नहीं होती है जैसे 20% हाइक, 30% हाइक। उनको पता है कंपनी को एक बार वंस कैंडिडेट इज ज्वाइंट तो पैसे के कारण ना भागे कंपनी छोड़ के। मे बी विल सी. 30% हाइक में बंदा ज्वाइन कर लेता है अदर कंपनी में, वो 3 महीने बाद सपने देखता है यार अगला 30% लेना है, छोड़ो। इसीलिए टिकता नहीं है ना टेलीकॉम में बंदा। राइट, राइट. और टावर टेलीकॉम में कंपनी इतना पे नहीं करती है। वी हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ इन करंट मार्केट, वी हैव ओनली 3 स्टार, 1 स्टार is going to shut down services or sell out whole assets. So it's a नहीं, अभी time पहले. to move yourself. तीन तीन ऑपरेटर में से एक ऑपरेटर ने अपने 40-50% एसेट सेल कर दिए हैं वोडाफोन ने, ठीक है। तो यू हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटी इंडिया टेलीकॉम सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yeah, what the scope of if I total experience in the RAN field, RAN integration. आपका रैन रैन इंटीग्रेशन में है, Yeah. तो आपका रैन में है एक्सपीरियंस, तो आप भी चीज़ों को तो जानते ही हो ना। इनिशियली जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, पैरामीटर पार्ट है, वो आप कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे इनोडबी को पैरामीटर देते हो ना। तो आपकी एक Correct. बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ऑलरेडी है। पीसीआई प्लानिंग करने के बाद पीसीआई और सीजीआई ये सब आप ही इंटीग्रेशन ड्यूरेशन में ही देते हो इनोडबी में। Yeah. Yes. ठीक है, Yes. कौन से चैनल हैं, कितना का बैंडविड्थ है, ये तो सब आपको नॉर्मल हिस्ट्री तो पता ही है, कितना यूटिलाइजेशन Yes. करेगा। आफ्टर इंटीग्रेशन आप फंक्शनल टेस्ट करते हो ना, वो साइट पे कॉल चल रहा है, डेटा चल रहा है, कितने यूजर लैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कर रहे हो ना उसी सेम चीज। Yes. तो सेम चीजें ही यहाँ पे करना है, लेकिन अपने को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। हमको इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू देना तो हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आप वंस क्रैक द इंटरव्यू, आप कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो बैकग्राउंड में आपको लॉग एनालिसिस ही करना है। कुछ बंदे फील्ड में टेस्टिंग करेंगे, वो लॉग देंगे, आपको लॉग एनालिसिस करना है। एक टेस्ट केस होता है जो कंप्लीटली फ्लो राइट डायरेक्शन करता है, एक रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन रहता है जिसके बेस में हम बग्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो Yeah. नो इशू, चाहे आप फाइबर इंजीनियर हो, चाहे इंटीग्रेशन इंजीनियर हो, चाहे आरएफ इंजीनियर हो, या ट्रांसमिशन इंजीनियर हो, नो इशू। प्रीवियस में जो है हम चेंज करेंगे उसको बेस्ड ऑन फॉर ए मंथ जर्नी, विल डेफिनेटली स्विच योर करियर, Okay. बिकॉज कंपनीज आल्सो डिमांडिंग टेलीकॉम इंजीनियर। तो प्रोटोकॉल पढ़ के कोई अलग से तो आएगा नहीं ना, कि न्यू वन बॉर्न बेबी आएगा और 18 साल वेट करेगा फिर एलिजिबल होगा काम करने के। जाना तो इन्हीं में से है, जिसका दिमाग शातिर होगा वो निकलेगा। बाकी जो सोच रहे हैं कि वी आर हैप्पी विथ लेस सैलरी लेस इनकम, तो बैठे रहेंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? Yeah. Right. नेक्स्ट। नेक्स्ट गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? बाकी सबका क्लियर हो गया है क्या? So what is the fee of this course? Fee will be 35,000. You can pay in 3 EMI option. We are also accepting credit card. Okay. Any other question? Sir, did I see any demo class? Sorry? Did any demo class available? Today is also demo ना, अभी पिछले 1.5 घंटे से डेमो ही चल रहा था। I think today is the overview. Any class for demo? No, I am providing just overview. We are not providing कि आप आओ यहाँ पे चेक करो 2 घंटा, नेक्स्ट फिर डिसाइड करो। If you decide here, मेरे YouTube में काफी वीडियोस पड़े हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। Okay, no issue. ओके, मेनली सर क्या ये कि लैब टेस्टिंग, ओके, यस 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 टेल मी। लैब टेस्टिंग आपने बोला था, तो फिर लैब टेस्टिंग के कोई लाइक हार्डवेयर लाइक जैसे की साइट है, अर्बिट्सो है, ऐसे कोई आपके मतलब एनालिसिस के टूल्स अवेलेबल है, या फिर क्यू कैट क्यू स्टेम के थ्रू ही? भाई इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट के पास ना तो की साइट है, ठीक है, और ना ही अदर टूल्स है। अगर कोई बोलता है मेरे पास ऑन सेटअप टूल्स है, मैं आपको लॉगिन प्रोवाइड करने वाला हूँ इनोडबी का, यूई का, तो सब फालतू की बातें हैं। नोबडी इज प्रोवाइडिंग, ऑल आर फेक। ठीक है, और वो चीज़ मेरे पास भी नहीं है। वी हैव 4 to 5 सेट्स ऑफ टूल, दोज टूल विल हेल्पफुल फॉर लॉग एनालिसिस, जो मैंने आपको शो किए हैं। वी हैव ऑन टूल,
We have on running team in field, India as well as Vietnam. In Vietnam, we are working for VNM Mobile, Movifone like operator. Okay. So it's easy And to providing all the stuff. ओके एंड ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आप सिर्फ लाइक इंडिया में ही अवेलेबल है या फिर आउट Everywhere, ऑफ कंट्री everywhere, भी? everywhere where is operator and user is available, everywhere job opportunity is available. ओके 5 to 6 month कंटिन्यूस जर्नी जो रहेगी उसमें आप अपना एफर्ट डालोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब. इफ सपोज आपने ज्वाइन किया, जस्ट ज्वाइन करने से घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है. ठीक है, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करोगे तो उससे मेरे को तो नहीं लगता है आज तक कोई बंदा सेलेक्ट हुआ है. इवन आप जब तक खुद का एफर्ट नहीं डालोगे while direction of a trainer, nobody will select any company. 6 महीने कंटिन्यूस एफर्ट डालो, ट्रांजिशन डन. वी हैव प्लेस सो मेनी कैंडिडेट. इसलिए मैं बोलता भी हूँ, दोज हु आर गिविंग टाइम, दोज आर ओनली ज्वाइंड दिस प्रोग्राम बिकॉज आई बिलीव ऑन सिलेक्शन. मेरे को सिलेक्शन कराने में मजा आता है. मैं डायरेक्शन जैसा देता हूँ आपको वैसा करोगे, विल डेफिनेटली प्लेस. उसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ. जो 2 घंटा पढ़ने को तैयार है, जो नहीं पढ़ने को तैयार हो, विल नॉट टेक एनी गारंटी. मैंने तो फाइबर इंजीनियर जो एलएनटी में तो फाइबर इंजीनियर थे आइडिया के प्रोजेक्ट पे, उनको एचसीएल और विप्रो में बैठे हुए हैं आराम से 30 लाख के पैकेज में. मतलब एक फाइबर इंजीनियर जब कर सकता है तो आप इंटीग्रेशन इंजीनियर हो, आरएफ इंजीनियर हो, फील्ड इंजीनियर हो, मतलब फाइबर वाले को लेना देना नहीं है ना रेडियो साइट से. करेक्ट. जब वो बंदा कर सकता है तो व्हाई नॉट यू. और कोई भी टेक्नोलॉजी बड़ी नहीं है कि 5G आ गया इट्स बिग. सारा एक फ्लो में पढ़ लो, खत्म काम. इंटरव्यू वाला पूछेगा टेल मी द कॉल फ्लो, कॉल फ्लो बता दो आधे घंटे में. सिलेक्शन तो वैसे ही हो आपका 90% तो बेस्ड ऑन कॉल फ्लो ही रहता है. अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25 कैंडिडेट हैं, कोई मेरे को कंप्लीट कॉल फ्लो बता पाएगा? अगर कोई एंड टू एंड कॉल फ्लो मेरे को बताएगा, मैं उसका फी बियर कर दूंगा खुद. अगर किसी के पास है, किसी को आता है, शेयर योर स्क्रीन, राइट कॉल फ्लो, 35 विल ऑफर. रेज योर हैंड अगर किसी के पास है कैपेबिलिटी अपने आप को प्रूफ करने की. यहाँ पे प्रोटोकॉल इंजीनियर को इसीलिए मार्केट में और इसीलिए जियो के अंदर जो क्वालिटी एंड एश्योरेंस की टीम है, उनके इंजीनियर को 25 to 30% ईयरली हाइक मिलता है. और यहाँ पे फील्ड इंजीनियर मर रहे हैं बेचारे 3% 5% में. जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज कि बंदे कैपेबल हैं, वो ड्यूरिंग वर्क स्टडी भी करते हैं फर्दर. तो आपको तुम फील्ड में दौड़ा दिया जाता है, जाओ भाई मोबाइल लेके जरा कस्टमर कंप्लेंट चेक करके आओ. 200 रुपये यूजर दे रहा है, उसके घर 4 बार घूमो, ऊपर नीचे देखो कि एंटीना उधर देख रहा है नहीं देख रहा है. यही होता है ना सुनील, संजय? यस यस. तो इसमें कोई लर्निंग तो नहीं है ना कैंडिडेट की? नहीं. दैट इज द रीजन जियो के पास इतनी मैन पावर उसने रख दी है. उसको पता है कि यार 4 लाख में 5-6 रख लो, 1-2 भाग भी जाएंगे तो मेरा काम चलेगा. अंबानी का ये अप्रोच है. एक जियो सेंटर में 10 इंजीनियर रख दिए, चल भाई 4 खाली भी रहेगा तो 6 तो हैं दौड़ने के लिए. एग्री और नॉट? कोई है जैसी में जिसको 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, 30 लाख का पैकेज मिल रहा है, वो 8 घंटे काम करके घर चला जाता है, उसको फोन नहीं आता?
इवन एरिक्सन, अगर कोई है यहाँ पे एरिक्सन अदर कंपनी में, रिपोर्ट बनाते जाओ SCFT का, क्लस्टर का, 2-4 पैरामीटर चेंज करते रह जाओ, इलेक्ट्रिकल टिल्ट, मैकेनिकल टिल्ट, A3 A5 A1 A2 3 हाई लो, इन सब में भी उतना ही पैसा मिलने वाला है। 10 लाख रुपए 12 लाख से ज्यादा कोई देता नहीं है कंपनी में आज के टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल। तो आप 20 में से कोई है कैंडिडेट है जो कॉल फ्लो बताएगा मेरे को? यस, मैं बता दूंगा राजेश सिंह। हाँ, किसका कॉल फ्लो पूछ रहे हैं आप, बताइए। शेयर योर स्क्रीन एंड राइट डाउन ऑल द स्टेप। राहुल, यू कैन चेक। देखो मैं एक्चुअली मोबाइल पे हूँ, मैं लैपटॉप आ जाऊंगा तो मैं आपको शो कर दूंगा। चलो, तो आप मेरे को ना अभी सामने में बताते तो ठीक रहता, बाद में तो कहीं से भी देख लोगे। ओके। चलो, आपके अलावा हिम्मत तो देखी मैंने, राजेश के अलावा कोई है? कोई नहीं है, दैट इज द रीजन। यहाँ पे कोई है जिसका 20 लाख का पैकेज है? गाइज, यस और नो? रेज योर हैंड इफ योर पैकेज 20 lakh। चलो, 10 लाख के ऊपर वाले कितने लोग हैं इसमें? संजय, एनी, नितिन? नितिन, आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है? फाइव ईयर्स 3 months। आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग में हो ना? मार्क्वेस में आप ही हो ना? हाँ, मार्क्वेस में था पहले, मैं फील्ड अच्छा, टेस्टिंग। मार्क्वेस में कितना टाइम दिया था आपने? 5 years लगभग। वो कितने में ज्वाइन किया? ज्वाइन तो सर 1.7 में किया था। 5 साल आपने रुके, ठीक है। और हाँ, अनुज, अनुज टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका? It's near about 12 year. 12 ईयर में 10 लाख के ऊपर है आपका पैकेज, तो इट्स, आई थिंक दिस इज नॉट गुड पैकेज। अगर 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, यू हैव Yeah, टू गो एटलीस्ट 20 प्लस। yeah, that's why I'm looking on the, yeah, that's why I'm looking for the next, because they have increment is very low on that year and year. इन विच कंपनी यू आर वर्किंग, अनुज? Currently I'm working on the MDocs, and the last company is Ericsson. ओके, तो एरिक्सन में वैसे भी 3% दिया जाता है ना? Yeah, that's why I 6 year on the Ericsson, so it should I was it, also part of Ericsson Global, Nupur Chaudhary team. Okay, I spent 7 years in Kolkata. yeah, okay, and the Noida. Yeah, then after I joined Reliance Jio as a QA team. Then I moved Okay, last back 2 years. okay. I increased my package within a Jio. Yeah, Ericsson is not, because there's lots of people in working in the team, so no Yes, value on that people. I joined Ericsson on that time 6 lakh in 2009 something, Okay, and I quit okay. Ericsson around 2015 with only 13 lakh, and I joined Reliance Jio double package. Spent 4.8 year something. Still, I am doing working as a consultant. We are supporting many projects. Okay. So now guys, Okay. I pinged the number on chat box. I think all have this number. This number belongs to our team. Those who are interested to join, ping this number. We'll share fee and all details. And batch will be start soon. So those who are interested, ping this number today. Okay.
So guys, who is going to join? Raise your hand so that I can understand. Who wants to join? Sir, can you tell the number, please? Because I can't get the number from the chat box. Yeah, 77 Okay. 099 Mm-hmm. 35 Hmm. 614. Sir, batch will start from which date? Batch will start by maybe on Monday. By tomorrow. But you will start from weekends, Saturday or No. Sunday, correct? Yes, we'll start in the weekend. Lots of candidates are waiting. So I decided to give 1 week in morning 7 to 8:30, 5 days session, then moved on weekend. And from actually, which platform we have to join? Platform will be Microsoft Teams because we are also providing recording if you miss the session. So our platform will be Microsoft Teams only. The recording will be provided in drives, Yes, Microsoft yes, Drives, or we'll what? provide in Drive on view option because we have Google Drive. lots of yes, Google Drive. Okay. And any document will be shared? Yes, yes. Every session we have separate document. After session, we'll share a document. And the documents are downloadable, or it will be it No, will be no. viewable? Download is downloadable. You can download. Achha. We can download the documents, but Yes, you yes. cannot download the videos. Correct? Yes, yes. Because the tool is so many costly and confidential. That's why we are providing only view option. And the recording will be available for next 6 months. Okay, recordings will available for 6 months. Correct. Yes, yes. And In 6 months we have choose ourselves whenever we can look, yes, or whenever we want to view. yes. Next 6 months will be available. And in future, suppose if you want to revise yourself, okay, so you want to revise, you can add, will add in any running batch without any cost. Okay. Because it's not a 1 or 2 month journey, it will take around 6 months. We'll cover all the syllabus on the next 4 months, but yes, you also need some time, 1 month or 2 months to complete this thing. I'm right or wrong? Sorry. 1 or 2 months means? We'll complete whole the thing in 4 months. Okay, from my side. You have time. 1 से 2 महीने आपको भी लगेगा चीजों को कंप्लीट करने में, चीजों को रिवाइज करने में. Okay. You are telling Okay. us 6 months. Yes. So if you are putting your continuous effort in next 6 months, you will get select in this domain. 6 महीने की मेहनत ही आपको कलरफुल लाइफ बनाने वाली है यहाँ. और जो बंदे डे 1 से स्टार्ट कर लेंगे वो 5 महीने में ही स्विच कर सकते हैं. कोई 4 महीने में कर सकता है, कोई 4G कंप्लीट होने के बाद ही कर सकता है. और डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट. सो गाइस, सर, आप जो रेज योर हैंड. जो कंटेंट्स आप दिखा रहे थे वो थोड़ा भेज पाएंगे सर व्हाट्सएप में या फिर ये इसमें जो हाँ, आप भेज देंगे कवर उसको. करेंगे? वो ऑलरेडी ग्रुप में है और आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, उस पे भेज देते हैं. ठीक. Also, this is available on our website. Okay. So guys, आप पिंग करो. रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको टीम will share the detail and all, but base timing, date, all will be scheduled on your WhatsApp number. Okay. Any other question you have?
Any other guys? सर एक और क्वेरी था एक्चुअली, जो आप टूल्स दिखाएंगे वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो। वी हैव सेपरेट टीम। वी हैव दीपक विल अरेंज। सपोज आपके पास टाइम है, संडे को आपने 2 बजे पिंग किया दीपक को, दीपक आपको टाइम दे देगा कि अरे 1 घंटे बाद मैं अवेलेबल होता हूँ। 1 घंटे बाद दीपक अपनी स्क्रीन, क्या था वो टूल कौन सा है, एनी डेस्क पे आप आके टूल को एक्सेस कर सकते हो। अच्छा सर, सिस्टम शेयर करके। हाँ, उसका कोई आप ड्यूरेशन है एक्वायर कर सर? लो। हम इतने घंटे ही कर पाएंगे बोल के, 5 अभी घंटे क्या 6 है कि घंटे? नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर है। अगर ज्यादा बल्क में क्वेरी आएगी तो आप 1 घंटा कर लो, और साथ में 1-2 बंदे और भी ऐड कर लो अपने बेंच के, साथ में मिलके कर सकते हो। पर यस, इन 4 महीने में आप कम से कम 8 से 10 बार टूल हैंड्स ऑन अपने से भी कर सकते हो आफ्टर ट्रेनर। फर्स्ट आपको ट्रेनर गाइड करेंगे कैसे करना है। ऐसा तो है नहीं कि टूल का एक्सेस मिल गया आप कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी विंडो पे क्लिक करने से क्या आने वाला है। तो डेफिनेटली विल प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एज वेल। ठीक है सर। So you can ping me. Thanks to all. Thanks Rahul, Deepak. Thank you guys. Thanks for your time.